हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज इस बाथरूम में पाइपलाइन की फिटिंग कैसे होती है मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बाथरूम में ये निशान लगा लेंगे पूरे। जैसे पाइप पड़ेंगे उसी हिसाब से पूरा निशान लगा लेंगे पूरे बाथरूम में। अब इसमें मशीन से पूरी लाइन काटी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पूरी झिरी कट के अब निकाली जा रही है। पूरा देख वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। छेनी दौड़ से जीरे को निकाल रहा, क्योंकि लाइट चली गई, मशीन से वैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें डाइवर्टर लगेगा, जो कि जैगुआर का है, 2 इनलेट डाइवर्टर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमटीए टाइट किए जाएंगे डाइवर्टर में, जो कि पौन आधा का है। अच्छे से धागा और सफेदा लगा के इसमें टाइट कर रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से डाइवर्टर में हमारे एमटीए टाइट हो गए हैं। देखिए चारों तरफ से ये डाइवर्टर जैगुआर का है, जो कि सीधा ऐसा लगता है, ऐसा उल्टा लगता है। तो सीधा लगाएं हमेशा ऊपर की तरफ। तो चलिए बाथरूम में करते हैं पाइपलाइन की फिटिंग। देखिए सबसे पहले ये टंकी की लाइन है हमारी, जो ऊपर से आ रही है। बाथरूम में हमारी फॉल सीलिंग होगी, तो ऊपर मेरी नहीं काटती, इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, ये डाइवर्टर आ गया, फिर रखेंगे इसको सीधा, बिल्कुल देखेंगे। उसके बाद सारी पूरी फिटिंग करेंगे। जगह जगह जहाँ सही से नहीं होगी वहाँ पर निकालेंगे मशीन से।
देखिए तो ये हमारा पीछे प्लस का पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर 1 पीस सीट रहेगी और आगे से टी लग के हमारी लाइन गीजर के पॉइंट के लिए जाएगी। ये हमारे आगे तो सीट के ये जेड स्प्रे का और हेयर फॉसेट का पॉइंट बन गया, वो लाइन आगे घूम के आएगी, उससे वॉश बेसिन का पॉइंट बनाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा गीजर का पाइप आ रहा है इसमें डाइवर्टर में। वहाँ पे बाईपास लगेगा, इसलिए इसको अच्छे से सफाई करेंगे धीरे की। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डाइवर्टर में पॉइंट आ रहा है, ये जो राइट साइड है, ये टंकी का पॉइंट है
और जो लेफ्ट साइड लग रहा है वो गीजर का पॉइंट आ रहा है। ऊपर हमारा शावर है, सीलिंग शावर है जो कि, और नीचे हमारा स्पाउट रहेगा और पास में फ्रेश पानी का एक पॉइंट बनाया है। Just perfect story. ये देखिए दोस्तों, नीचे हमारा स्पाउट का पॉइंट बन रहा है और ऊपर हमारा शावर का पॉइंट खड़ा हो गया है, जो कि सीधा ऊपर एक एल्बो मार के निकाल दिया क्योंकि फॉल सीलिंग है, उसमें सीलिंग शावर लगेगा बाद में। नीचे स्पाउट का पॉइंट। तो देखिए ये पूरी फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा डाइवर्टर रहा, इधर ये फ्लश का पॉइंट है, ये जेड स्प्रे ऑयल फॉसेट का, ये नीचे है 1 सीट का, और इधर हमारा वॉश बेसिन का पॉइंट बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉटल ट्रैप है वॉश बेसिन का। देखिए हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर का पॉइंट बना दिए हैं। और ये पूरे बाथरूम की हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।